good evening. Welcome to your own Aakash Byju's NEET channel. Ma'am is here yet again with another amazing session of the chapter Cell. This is the lucky 7, L7. Yeah, I'm really fond of the number 7. I'm number 7 myself. Happy evening, Kritika, Sachin, so good to see you. Aditi, Datta, Viluri, Gitanjali, thank you so much. And I was always waiting for you. Happy evening. We can still increase the font. Cutie Sharma, that's a nice name. Good evening, beta. So happy to see your smile. Oh, Shraddha, I'm so happy to see you here and I want you in every class. Ritu Kumari, good evening. Arindhma, Parmanand, Cutie Sharma, good evening, beta. It's a lovely evening, everybody, to make learning fun and fall in love with botany, isn't it? Yeah? So give me big smiles in the chat box. Everybody should be smiling. Huh? Even if it is a forced smile. Yeah, whatever has happened during the day, very good day, average day, not a good day. Give me huge smiles in the chat box. I want my children super happy, super excited for this very, very important and a wrapping session of the chapter Cell. And I want to give all my lovely children a very good news. I have planned, Bushra Khan, Gitanjali, thank you for your smiling and beautiful and lovely faces. Vinay Sharma is here. Mohammad Bakas, good evening. Juhi is here. Souvik. Okay. Bhavya Thakur, good evening. Good evening, bachon. Acha, share to karo session. Did you share the session? You have to share this session. We want all good students. We want collective intelligence in the class. है ना? तभी तो आकाश बायजूस नीट के बच्चे रैंकर बनेंगे हर साल की तरह. है ना? पूजा वर्मा, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हो? बॉबी सिंगम, गुड लक टू यू टू. तजिंदर राणा, गुड इवनिंग. बच्चों, अभी जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो आपको एक वीडियो देखने को मिला था. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग सुपर्ब लॉन्च्ड बाय आकाश बायजूस एंड दैट इज द आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम. This exam will be conducted for all the students across the country. It's a national exam from grade 8th to grade 13. तो आप लोग अगर 11th class में हो, 12th में हो, 13th में हो, please enroll for this test because this test could ensure a free trip. All your expenses will be paid. Free for you trip to NASA. Yeah? That is first time in the country ever. Yeah, you will get a chance. Somebody, Aakash Byju's, if you are a scorer, if you're a top ranker, will send you to NASA and you will get cash rewards and you will get 100% scholarship and whatnot. तो link दिया हुआ है description में, उस पे click कीजिए and register, enroll for this wonderful ANTHE test. It will be conducted in November. Okay, so you have a lot of time to prepare. You have a lot of time to prepare. You can start preparing now. तो ऑनलाइन टेस्ट होगा 5 और 13 नवंबर को, है ना? किसी का बर्थडे होता है, ओके. एंड ऑफलाइन होगा 6 और 13 नवंबर को. ठीक है भाई. गुड इवनिंग. देव प्रसाद, गुड इवनिंग. बेटा क्या, सचिन ने बड़ा प्यारा डाउट पूछा, मैम क्या पढ़ना होगा? जिस क्लास में हो, जब तुम लिंक पर क्लिक करोगे ना, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. इसलिए अभी क्लिक कर लो, मैं तो कहती हूँ, है ना? तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप किस क्लास के कैंडिडेट हो. ओके, एंड द लेवल ऑफ दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी रियली गुड. जैसे ओलंपियाड्स होते हैं ना, वैसे वाला ये एग्जाम है. बट आफ्टर यू क्लियर दिस एग्जाम इट विल रियली हेल्प यू विद all your preparation and other things. You'll get a lot of help, assistance from the Aakash Byju's NEET team. Shivam Soni, namaste beta. Welcome to the class. Okay, Ujjain branch. Very good. Welcome to the class. Vajpayee ki padhai. That's an interesting name. Beta, share this session with everybody in the branch. है ना? आज सब पढ़कर देख लें पंखुरी मैम से. Can we do that? Share the session with everybody. Yeah. Good evening, बच्चों. Good evening. Welcome to all the students from Aakash. चाहे आप offline हो, online हो,
वेरी लवली टू हैव यू इन माई क्लास। तो अब ना जरा कहानी हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि कौन कौन से टीचर्स इस चैनल पर आपकी कब कब क्लास लेने आते हैं। 12वीं और 11वीं की इंडिपेंडेंट सीरीज चल रही है। आज से ड्रॉपर्स बैच स्टार्ट हो चुका है। जो आपके सीनियर्स हैं, अगर आप खुद ड्रॉपर हैं तो उस बैच में आइए। इट इज़ द एक्सक्लूसिव ड्रॉपर्स बैच फॉर नीट 2023 एस्पिरेंट्स। अभी शाम को 3 बजे सचिन सर और मैंने उस बैच को लॉन्च किया है। उस सेशन को देखिए जिसमें सर ने और मैंने कलेक्टिवली बताया है कि उस बैच में स्पेशल क्या आपको फायदे होंगे, कैसे आपकी प्रिपरेशन फुली इक्विप्ड होने वाली है ना। वी आर गोइंग टू मेक द बेस्ट सोल्जर्स ऑफ नीट इन दिस कंट्री, है ना बच्चों। और जो मैं हर क्लास में बोलती हूँ, देखो आकाश बायजूस की तरफ से इतने सारे गिफ्ट्स जो मिल रहे हैं, आई कॉल इट द पेंडोरा बॉक्स। यू नो व्हाट इज अ पेंडोरा बॉक्स? Bobby Singham, you're a dropper. Please join the droppers batch. I want to see you in my class. It's going to be a power-packed batch. NCERT करवाने वाली हूँ, previous year questions करवाने वाली हूँ, concepts करवाने वाली हूँ, सब होने वाला है। Motivational videos आएंगी। आप लोगों ने देखा होगा, I've started a lot of counseling and motivational sessions on Aakash Byju's NEET. I just on Sunday, दैट इज येस्टरडे, मैम ने तुम्हें एक टाइम टेबल दिया है, 2023 के बच्चों को एक टाइम टेबल बनाकर दिया है। आई एम गेटिंग मैसेजेस दैट इट हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो उस सेशन को जरूर देखिएगा। ओके, इट इज राइट देयर, कल ही लिया है सेशन। ओके, तो बच्चों अब ना हम स्टार्ट करते हैं। Please like this session, hit the like button, subscribe to this channel if you're new to the channel because there are so many amazing magical things here. Yeah, and share this session with friends, family, neighbors, non-neighbors, enemies, everybody. Yeah, because knowledge, everybody has the right to pure knowledge. And if you still have any concerns, anything you want to talk to me about, if anything you want to ask from Aakash Byju's team, please put your concerns in the main comment section and we'll take care of them, I assure you. Good evening, people are still joining. Now, as my lovely and favorite batch of students, what we do in everyday's class, let's do that also. Rofina Rafiq, beta dropper batch was launched today. Okay, it will start tomorrow. हाँ, तो कल आपकी 1 बजे क्लास होगी। अभी 3 बजे जो लोग उस सेशन में नहीं थे, 3 बजे डॉक्टर सचिन कपूर एंड आई हैव लॉन्च द सेशन इन्फॉर्मिंग यू गाइज कि इस सेशन में क्या होता है, व्हाट आर वी ब्रिंगिंग, हाउ इज दिस डिफरेंट, ओके, एंड हाउ इट विल इंश्योर दैट योर प्रिपरेशन इज बेस्ट। धनंजय यादव, बेटा मैं 2024 के बच्चों के लिए भी टाइम टेबल लेकर आऊंगी, लेकिन वो काफी मिलता जुलता है। मैंने एक काफी स्ट्रेटेजिक टाइम टेबल बनाया है, आप उस सेशन को जरूर देखिए। शिवा, कैन वी पेस्ट द लिंक बाय एनी चांस? संडे वाला सेशन, इट हैपेंड एट 3 PM yesterday. बच्चों 3 बजे कल चैनल पे आपको मिलेगा। आई एम गेटिंग द लिंक ऑल्सो। ABC 123 एंथे के क्रेडेंशियल्स आपको टीम भेज देगी, आप बस इस लिंक पर क्लिक करके एनरोल कर लीजिए। हाँ, rest everything the team will take care of it. We have an amazing team sitting there to help you. Okay, चलो let's start. आपके बाकी सवाल मैं जैसे जैसे क्लास होती जाएगी देती जाऊंगी। We are good with the chat. Okay, चलो अब ना पिछली क्लास में मैम ने न्यूक्लियस के बारे में बात करनी शुरू की थी, राइट? तो मैम ने काफी बात कर ली थी न्यूक्लियस की कि भाई न्यूक्लियस इज सेल विद इन अ सेल, और मैम ने बोला कि जरा इस बात पर गौर फरमाएं कि व्हाई इट इज कॉल्ड अ सेल विद इन अ सेल, बिकॉज दिस गाय हैज इट्स ओन एनवेलप, हैज इट्स ओन साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड इट हैज एन ऑर्गेनल लाइक न्यूक्लियोलस. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू टॉक अबाउट न्यूक्लियोलस. लिखोगे ना मेरे साथ? अच्छा, मैम ना एनसीईआरटी तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर पढ़ाते हैं, क्योंकि 2022 में बायो का पेपर, स्पेशली बॉटनी का पेपर थोड़ा मुश्किल था, और मैं ऐसा मानती हूँ कि आने वाले टाइम में वी आर गोइंग टू गेट बैक टू अ गुड लेवल ऑफ पेपर. Alright, so I want my students the best in the country. Now, Nucleolus is a naked. Many people do a mistake here. They think that Nucleolus has a membrane.
No, nucleolus is a naked entity. We can't call it an organelle also. So, what is it exactly connected to? It is connected to the euchromatin that you studied with ma'am in the last session. Remember, we talked about the chromatin material. There's a reticulum or network of chromatin within the nucleoplasm. Yes, ma'am, I sort of remember. And if I'm revising regularly, then I completely remember. So, euchromatin is the true or the functional chromatin. Yeah. So this is connected to the euchromatin, and that region or connection is called as, previous year AIMS question, it is called as NOR region. Okay, this is not in NCERT, so we'll keep adding in the sticky notes. Make some sticky notes and paste them in NCERT. So this is called nucleolar. This is called nucleolar organizer region, है ना? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. अब अगर ये नेकेड है, यानी कि इसके पास कोई मेम्ब्रेन भी नहीं है एंड इट इज सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, तो लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका जो वजूद है, इसका ये एक रफली स्फेरिकल एंटाइटी है, ये इसकी एक पोजीशन, देखो सेल में ना हर चीज की एक पोजीशन है, नथिंग इज हैपनिंग रैंडमली. तो न्यूक्लियोलस अपनी जगह पर कैसे बना रहता है? वेल, द रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, बट इट इज अ पॉपुलर बिलीफ दैट calcium ions keep the nucleolus at its place and give it a specific configuration, because you know calcium salts जहां पर present होते हैं वहां अक्सर configuration आ जाती है. अब nucleolus का जो major function है, I don't want you to jot down a lot of stories. Okay, ma'am is all about keywords, because the exam is all about one right correct choice, one keyword, and that gives you the fabulous 4 digits, yeah, the 4 marks, and gives you a rank. Yeah, so one important, very highlighted function of nucleolus, my children, is the formation of rRNA. To be very precise, the formation of ribosomal RNA. Now, people who are coming in this class today, okay, might find it a little foreign. Ma'am, क्या हो गया ma'am? What is rRNA? What is ribosomal RNA? So, now that is why I tell you, please be regular to the classes. Please stay connected with ma'am, because ma'am is trying to form a network of concepts in your head. Ma'am might talk about biological classification of all the chapters that she's done last month, and the knowledge could apply in this chapter. है ना? So it is very important to stay connected. Now that said, if still you are late, you did not know, you are aware of ma'am's class today, go to the playlist and watch Friday ka session. Which session? Friday का सेशन where I've talked about nucleus in detail. है ना? तो हमने राइबोसोम्स की भी उसी सेशन में बात की थी, और मैम ने बताया था कि राइबोसोम्स are what particles? What are they? हाँ? They are majorly formed of ribosomal RNA and proteins. And proteins, we call them nucleoprotein particles. तो आरएनए कई तरह के होते हैं, बड़े बच्चे जानते हैं कि 3 तरह के आरएनए होते हैं. देयर इज एमआरएनए, देयर इज आरआरएनए, देयर इज टीआरएनए. तो राइबोसोमल आरएनए ये न्यूक्लियोलस बनाता है. यानी कि अगर मैं थोड़े से ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना चाहूं, नॉन सीरियस स्टेटमेंट देना चाहूं, तो मैं ये बोल सकती हूं कि न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंबली और द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स. बट यू नो द डीपर पार्ट ऑफ इट. Okay, what part of ribosome is made from nucleolus? It is the RNA, rRNA. अच्छा, न्यूक्लियोलस का ये फंक्शन आ गया. तो ये तो टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है, ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन मेरे बच्चों को ज्यादा पता है. उसके बाद एक और बात याद रखिएगा कि जब सेल डिवीजन होती है ना, अगर मैं अपने छोटे बच्चों से बात करूं, अगला चैप्टर मैम सेल डिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, या इट विल स्टार्ट इन दिस वीक इटसेल्फ. तो उसमें आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में कि क्रोमोसोम्स नाचते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स.
with the help of spindle fibers. और बड़े बच्चे तो सारा कुछ जानते हैं, spindle apparatus, aster bodies and this and that. तो वो जो spindle apparatus बनता है, spindle fibers बनते हैं, they are also formed by nucleolus. So I'm going to write it here, spindle apparatus formation, spindle apparatus formation. तो ये सारे पॉइंट्स को आप जरूर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये पॉइंट्स मैं सिर्फ आपके नोट्स भरने के लिए नहीं लिखवा रही हूँ. These are all previous year question. Ma'am would never burden you with anything. Trust me. Trust me on that. If they start asking us to recite a song, I will start teaching you a song. But right now, at this moment, these are the important questions that the examiner is picking up, and hence ma'am is making you write them down. Now, coming back to what we studied in the previous class was the la blah blah of the chromatin fibers present in the nucleoplasm. So that is one of the defining features of the nucleoplasm, because nucleus, after all, is enveloping our genetic material, the DNA, the very blueprint of existence, the code. Yeah. Now people, when a cell divides, yeah, you know mitosis happens, you know meiosis happens, the two kinds of cell division. Ultimately, I have to divide this chromatin fiber, which is carrying the code, equally to the daughter cells, because I want the cells of my hands to actually divide and form the cells of my hand and not something else. Yeah, so I want to replicate the parent cell. That means that chromatin material has to be equally divided. First, of course, multiplication will happen and it will double up, and then it has to divide equally. So in order to equally divide the chromatin material during cell division, it has to condense and assume a shape, and those shaped entities as a result of condensation, if you will, is called chromosome. Okay, so chromosomes are nothing. At this point, if I have to deal with it very softly and tell you कि आप 11th में हो, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है. Those are vehicles of passing, or rather transmitting genetic information. Yeah, and why am I doing this? Why that network of chromatin fibers, very fine thin chromatin fibers, are becoming chromosomes, so that, you know, now I can count. Okay, if there are 10, 5. Yeah, so equal distribution of chromosomes, of genetic material. Yeah, now every chromosome has two chromatids. What you see here is 1 and 2. But these are the two arms, so don't get confused. Have a careful look at the screen. Each chromosome has two chromatids. What you see here are two chromosomes. Yeah, homologous chromosomes are the similar chromosomes. Yeah, which are usually carrying the genes for same characters. Yeah, one comes from father and the other comes from mother. We'll deal with it in the next chapter. But I just want you to have a look at the red chromosome right now. So it has 1 and 2. Two chromatids called as sister chromatids. Now these sister chromatids, my children, are connected at this junction. They are connected at the junction called as the centromere. Very important previous year question, and I think it's the easiest question that they can ask. Yeah, God bless you with that question. So one centromere that holds two chromatids, but wherever it is present, here or here or here or here, it is going to basically divide the chromosome into two arms. So you see the shorter arm here and the longer arm here. So in order to understand better, we call them as the P and Q arms. You with me? So divides, this centromere is dividing the entire chromosome into the P arm and the Q arm. Okay. Now very important to understand that centromere is also called as primary constriction. Ma'am, इसका इतना importance क्या है? देखो, जब ये chromatid separate होंगे ना, जब ये chromatid separate होते हैं cell division में, तो separation इस level पे होती है. So centromere defines the point. The primary constriction defines the point where actually the chromatids will separate from each other. Okay, and they will be ready to say goodbye
and go to daughter cells, two daughter cells. Now, if none of this makes sense to you, if none of this makes sense to you, अगर मेरा कहा हुआ एक भी शब्द समझ में नहीं आया है, तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती कोई. Congratulations. Okay, so don't worry. Whatever we're talking about is the topic of cell division. So I'm saying all this because some students, some of my lovely kids here know what I'm talking about. लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल परेशान मत होने की जरूरत नहीं है. अगला चैप्टर सेल डिवीजन होगा जिसमें मैम आपको ये सारी कहानी दोबारा से समझाएंगी, दोबारा से बताएंगी. चलिए, अब सेल डिवीजन में ही पढ़ेंगे कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पर कभी कभी we have a disc shaped structure called as the kinetochore, है ना. यहाँ पे आके हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं. इट इज फॉर बेटर अटैचमेंट. दिस इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस इन नेचर, दिस इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस इन नेचर. अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा कि एक क्रोमोसोम में जो उसका एंड होता है ना, जो उसका खत्म होने वाला पॉइंट होता है, उसको अक्सर बोलते हैं टीलोमियर. ओके, टीलो का मतलब ही होता है टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द एंड. ओके, अब कुछ क्रोमोसोम्स में, ये भी प्रीवियस ईयर एम्स क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखें, प्रीवियस ईयर एम्स क्वेश्चन है कि कुछ क्रोमोसोम्स, सम क्रोमोसोम्स, कुछ क्रोमोसोम्स, नॉट ऑल, okay, will have a secondary construction. Ma'am, what is a secondary construction? अब जो मैं बता रही हूँ वो छोटे बड़े सबको समझना है ये बात. This is an important question. It can be a ranker question for you tomorrow. So कभी कभी towards the end, यानी कि टीलोमेरिक पोजिशन पे, कौन सी पोजिशन पे मैम? डिस्टल या फिर टीलोमेरिक पोजिशन. अच्छा, आज ना बायो का एक बड़ा बेसिक क्लियर करती हूँ यार. डिस्टल और प्रॉक्सिमल का क्या मतलब होता है यार? किसी भी स्ट्रक्चर में अगर हम सेंटर चूज कर लेते हैं ना उस स्ट्रक्चर का कि ये सेंटर है, ओके, सो वॉट एवर पार्ट विल बी अवे फ्रॉम द सेंटर बिकम्स द डिस्टल पार्ट एंड वॉट एवर इज टुवर्ड्स द सेंटर बिकम्स द प्रॉक्सिमल पार्ट. प्लीज मेक दिस क्लियर बिकॉज बायो में जोलॉजी पढ़ो, एनाटॉमी, सॉरी, जोलॉजी पढ़ो, बॉटनी पढ़ो, वॉट एवर यू स्टडी ना, हर बार कोई भी स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी हो, प्लांट बॉडी हो, इस तरह से एक्सप्लेन होता है. तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो रेस में दौड़ते रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि बेसिक्स क्या हैं सब्जेक्ट के. तो इन टर्म्स को क्लियर कीजिएगा. तो अगर वो बोलता है डिस्टल एंड, यानी कि जहां पे क्रोमोसोम खत्म हो रहा है ना, उस एंड पर कभी कभी एक और सेंट्रोमियर जैसा स्ट्रक्चर यानी कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है. और उस साइट पर हमने ये देखा कि एक आउटग्रोथ होती है, एक छोटी सी एक आउटग्रोथ होती है. उस आउटग्रोथ को बोलते हैं जी सैटेलाइट. उसको क्या बोलते हैं दुनिया में? सैटेलाइट. उस आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट. what is it? Part of the chromosome separated by secondary constriction. वो जो एक फ्रैगमेंट रह जाता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट. और ऐसे क्रोमोसोम्स को बोलते हैं सैट क्रोमोसोम्स. सैट क्रोमोसोम्स. मैम क्यों यार, इतनी क्यों इंफॉर्मेशन दे रहे हो, नहीं याद होती है यार? बिकॉज जब क्लास 12th में जेनेटिक्स और बायोटेक पढ़ोगे ना, ये दोबारा आएगा और उस वक्त तुम मुझे याद करोगे. So I don't want you to be a question mark when you go to class 12th. Wherever, with whoever, Earth or Mars, Pluto or Neptune, wherever you study, I want your basics cleared. So these are called SAT chromosomes. और इन SAT chromosomes के basis पे हम cells को differentiate कर पाते हैं. अरे इस ऑर्गेनिज्म में ये सैट क्रोमोसोम है, ये वो वाला ऑर्गेनिज्म है, अरे इस ऑर्गेनिज्म में सैट क्रोमोसोम इतने हैं, इतने नहीं है. सो दीज आर ऑल यू विल स्टडी इन बायोटेक. या सो सैट क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज मार्कर क्रोमोसोम्स. मार्कर क्रोमोसोम्स. Yeah, let's see the chat box. Guys, see, ma'am gives you extra information because she wants you to stay ahead in this race of NEET. Shiva, let's see the chat box. Yeah, so that you are better than others, because it is winning this competitive exam, winning this competition is about doing things differently. So are you guys happy? Give me a thumbs up in the chat box if you want ma'am to give you extra information.
Give me a lot of thumbs up and Josh in the chat box. Come on, people. I should not be the only one with all the Josh and excitement for studying Nucleolus and Nucleus. Come on. Give me a lot of thumbs up in the chat box and let me know if you want me to give you extra information, because you are preparing to be the top ranker. Yeah, and not just NEET aspirant. Yeah, you are going to make sure that the success is yours, isn't it? Isn't it? Lot of thumbs up in the chat box, and please hit the like button and share this session with as many people as you know. Even JEE aspirants. Yeah, let people think for a moment, hey, biology is more charming than maths. Maybe we should also become doctors. Yeah, do that service to people for the love of biology. For the love of biology. Now people, this will come in the chapter of cell division, so I'm not going to spend a lot of time on this. I want you to be happy, I want you to have fun. लेकिन मोटी बात ये है कि भाई सेल डिवीजन के दौरान एक ऐसा फेज आता है जो मैं अभी नहीं बोलूंगी, जिसमें क्रोमोसोम्स की शेप एप्रिशिएट कर सकते हो, और वो जो शेप है ना, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर. Okay, I'm not going to take this further. I'm categorically not going to take this further. Thank you, Prem. Prem is saying, please hit the like button for ma'am. Yes, please do that, because I want everybody to study cell the way you all are studying. चलो अब आ जाते हैं जी सीलिया एंड फ्लैजिला. तो मैंने तुम्हें हमेशा बताया मेरा ना एक लगाव है सेंट्रियोल, सीलिया और फ्लैजिला से, पता नहीं क्यों. आई जस्ट फाइंड दीज स्ट्रक्चर्स वेरी नाइस. यार सीलिया एंड फ्लैजिला, अगर तुम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करो, कुछ बच्चे मेरे साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते आए हैं शुरू से. I have some regular students in the class and they know कि यार ये जो प्रोटिस्टेंस हैं, अगर मैं मोनेरा, चलो मोनेरा की बात करते हैं वरना बैक्टीरिया को बुरा लग जाएगा. अगर मैं मोनेरा की बात करूं, this is one of my favorite questions. Do you know what I'm getting at? Cilia are not present in monerans. Yeah, so their locomotory structures are flagella, isn't it? But this flagella is different from a eukaryotic flagella. Repeat with me, everybody. This flagella, moneran flagella, is different from a eukaryotic flagella. I taught you the structure of moneran protestant flagella quite nicely when I taught you about monera, about the kingdom monera. आज अपन पढ़ेंगे eukaryotic flagella, और मैंने आपको कहा था सेल के चैप्टर में मजे ही दार स्ट्रक्चर है ना, रंगोली टाइप स्ट्रक्चर है, जैसे तुम रंगोली बनाते हो. सो पहली बात, हम आज यूकैरियोटिक फ्लैजिला पढ़ेंगे, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल में है चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल में है, उसका काम क्या है? उसका काम है लोकोमोशन, ऑर्गेनिज्म को चलाना. इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ पे सीलिया लिखा हुआ है, मैं फ्लैजिला पे लेके जाती हूँ. सो फ्लैजिला इज एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलते हुए, याद है हमने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था बेसल बॉडी, हुक एंड द फिलामेंट. So it is an extension of cell membrane only and it helps the organism to move, for example bacteria. उसके अलावा आपको ये protists में भी मिलते हैं. Talk about dinoflagellates, talk about euglena. Do you remember that heterocont condition? One of the favorite questions of the examiner, the ranker question. जो नए बच्चे हैं, please go to the playlist and watch that session. Yeah? चलो. Aditi, still you are with ma'am. You are in ma'am's class. That's so sweet of you, darling. Yeah, hope to see you more and more in my class. Yeah, ultimately you should be happy. Chalo, we are good. Thank you. So ये प्रोटिस्टा में है, और कहाँ पे फ्लैजिला होते हैं? अरे फ्लैजिला हमारे ह्यूमन स्पर्म्स में भी होते हैं. तो मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. ओके, चलो. सो ये बात हो गई, स्पर्मेटोजोआ टू बी वेरी प्रिसाइज. तो अगर मैं सीलिया की बात करूं, तो सीलिया हमारा आया, शिवा वी आर गुड यार विद द चैट. सीलिया हमारा आया था बाद में, मोनेरा के बाद. व्हेन वी मूव्ड ऑन टू प्रोटिस्टा, तो हमारे सीलिया आए थे एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. यार फ्लैजिला ना 1 से 4 मिलते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में 1 है, किसी के पास 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं पर सेल, लेकिन सीलिया बहुत सारे होते हैं. So they are very, very small. Do you see that paramecium? This is the paramecium. Yeah, paramecium. Protestant paramecium. So paramecium में देखिए बॉडी के पूरे सरफेस पे
throughout the body surface you have cilia. They're very small hair-like structure. और ये ना शरीफ होते हैं. They move in a coordinated manner. They move in a coordinated manner. कैसा manner? मैंने आपको तब भी बताया था. If you do kayaking, you understand kayaking? The kayaking, kayak. It's a kind of a boat. Yeah, if you've done kayaking, so you move the oars together. Otherwise, you will not be propelled forward. ठीक है ना? तो आप क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? चप्पू. Yeah. So you have to move them together. Those are called the oars of the kayak. A lot of shoulder strength is required. You should do that. It's really nice. Yeah. तो इस तरह की मूवमेंट से एक कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेटेड फोर्स क्रिएट हो जाता है एंड द ऑर्गेनिज्म इज प्रोपेल्ड फॉरवर्ड्स. This is also called as a sweeping motion. It is also called as coordinating sweeping motion. Sweeping motion. हो सकता है कि सीलिया साथ में ही मूव कर रहे हैं. Then that is called as isochronic motion. हो सकता है ये एक के बाद इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक के बाद मूव करें. That is called as metachronic motion. लेकिन overall it is a very well structured, well designed movement. If I talk about flagella ना, तो उसकी movement is like a whip. और the undulatory movement. Undulatory movement. हाँ, कि कभी आप ऐसे whip करेंगे तो वो कैसी motion होती है? Whip moves like this. Yeah, so this wave of motion. This wave of motion moves from the base of the flagella to the tip of the flagella. The wave-like motion moves from base of flagella to the tip of the flagella. Okay? तो ये इस तरह से इसको whiplash movement भी बोलते हैं. So this is called lashing the whip. So whiplash movement. क्या क्या करना पड़ता है तुम्हें समझाने के लिए, है ना? चलो, अब ना good news is, दुनिया की सबसे अच्छी न्यूज ये है कि जो साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, स्टडी ऑफ सेल, वो सीलिया और फ्लैजेला का एक जैसा है ना? तो कुछ अलग नहीं पढ़ना है. फ्लैजेला कहाँ से आता है? बेसल बॉडी से आता है. बेसल बॉडी कौन बनाता है? पिछली क्लास में बताया था, सेंट्रियोल्स बनाते हैं. अब मैंने इसको माइक्रोस्कोप के अंडर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, विच मेक्स सीलिया एंड फ्लैजेला एज द कॉन्ट्रेक्टाइल और द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स. ये आई मजेदार बात यार, जब तुम लोग मसल का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, है ना, द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स, द sarcomere and everything, उसी तरह से this structure, because of this structure, the unit, the structural and functional unit of the structure which gives it the essence of being locomotory is called axoneme. Question number 1. Haha, one question in your pocket, happy, है ना? तो मैम के साथ क्लास में बैठो, अपने क्वेश्चन बनाते जाओ, चिल मारो लाइफ में, है ना? So this is one axoneme that you see on the screen. So many axonemes together will make a cilia or a flagella. Yes, ma'am, I got it. Now, people, interesting piece here, interesting information is that this is very similar to the structure of centriole that you studied with me in the last class. And the key word that day was fibrils. I explained you what a fibril is. बताया था ना मैंने, वो रस्सी, वो धागा जिसके पास अच्छी खासी खींचने की कैपेबिलिटी है. बट फाइब्रिल्स are made up of microtubules. Okay, and microtubules are supposed to be made up of the contractile proteins. With me on this? Yeah, so microtubules here are made up of tubulin. आया? So tubulin is that protein. प्रोटीन की क्लासिफिकेशन बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हो, है ना? मासूम मत बनना, पढ़ चुके हो. स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, enzymatic protein. So this protein makes sure that these structures can expand and contract, and hence they are locomotory. Now coming back to how they look like, the cytological structure. Now there we had the cartwheel, there means centrioles. Okay, so there we had the 9+0 arrangement, is it? So here, to begin with, it is a 9+2 arrangement
My favorite question. Yeah, so question number 2, there you go. Question number 2 is, the arrangement is, अच्छा ये सबसे ज़्यादा famous question है. Okay, so this is the 9+2 arrangement. Now what is this 9+2 arrangement? Let's look at that. So वहाँ पे भी peripheral 9 ही थे microtubules और 3 थे triplet of microtubules. Remember? C, B, A, considering this is the center. So this was the A microtubule, B and C. Remember last class? Now, similarly, here also at the periphery, you have 9 couplet of microtubules. So this is the biggest difference. Couplet of microtubules. And the good news is here also they are A. Let me change the color. Yeah. Here also you have, let me see the chart box. A and B. A and B. Ayo, this is not visible. Let me find a way to this. Yeah, this is A, this is B. This is A, this is B. Now people, how did I, let's see the chat box. How did I identify A and B? Well, as was the case here, the one which is connected to the center now, that is the A subtubule, microtubule. Okay, so here also you see A is connected to the center. यार समझ लो, बाद में बात कर लेना. Pawan, you can put this doubt in the main comment section ना बेटा, and focus on what ma'am is doing. तकनीकी दोबारा आ रही हूं मैं. अब यहां पे सेंटर खाली नहीं है, सेंटर में आपको सिंगलेट ट्यूब्यूल्स मिलते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यार. सो periphery is couplet, they will always be in a pair and these are not a pair. अच्छा यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई है. Let me correct that galti very quickly. You see there? Why I am calling them a singlet? Because they are 1 and 2. But they are joined by a double bridge. Okay? This is a true and false kind of question जो 2023-24 में आने के chances हैं. Which of the following structures, ये मैंने इतना देखा है previous year question में कि मैं आपको बता नहीं सकती कि which of the following statements is true regarding the structure of cilia and flagella? So, 2 singlet है, couplet नहीं है, are joined by a double bridge. Are we together in this? But these are couplets. Now, I'm going to mark A, and A. Now, what happens from A is that we get 2 arms. Can you see the arms here on the screen, people? Arms. There you go. Now it's clear. Actually, they are curved. But ठीक है, वो तुम्हारे syllabus में नहीं है. इस तरह से A subtubule से 2 ऐसे arms निकलती है. मान लो मैं A subtubule हूँ. ठीक है, I am the A subtubule. मेरे पीछे एक भूत खड़ा है, that is B subtubule, microtubule. Okay? और हम A और B periphery पे हैं. So me, the A subtubule, is connected to the center. You are the center towards you. I'm connected to you so much. But I also have 2 arms sending you hugs. Yeah? So these 2 arms here are very important. So question number 1, who is connected to the 2 arms? It is the A subtubule. 2 arms. Yeah? So these are all ranker questions that I'm giving you, but they are given in NCERT in a very muffled manner. किच करके दिया हुआ है, बट दिया हुआ है. तो मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रही. अब अगली चीज, सवाल ही सवाल. ये जो 2 आर्म्स है ना, मेरी ये जो 2 आर्म्स हैं, who am I? I am A subtubule. Who am I? I am A subtubule. Okay? I am A subtubule. Why am I saying subtubule? Microtubule, subfibril, microtubule. Okay? Now these 2 arms are made up of another contractile protein called as dynein.
I am not going outside NCERT. Might as well note this down. This dynein has the property to deal with ATP. It has the ATPase activity, ATP synthase activity. ओके, तो इसका मतलब सीलिया और फ्लैजेला किसकी हेल्प से मूव कर रहे हैं? एटीपी की हेल्प से. और वो एटीपी कैसे आएगा? मेरी आर्म्स की वजह से. डाइनिन. सो अ वेरी वेरी रैंकर क्वेश्चन इज कि भाई ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, I am made up of tubulin. The bhoot microtubule B is made up of tubulin, but my arms are made up of dynein. Got it? Yeah? Makes sense. Give me a thumbs up if it makes sense. Quickly, people. और कुछ बताना है? हाँ. बाकी बात अंडरस्टूड है, जो सेंट्रियोल में भी पढ़ा था भाई, कि ये जो ए सबट्यूब्यूल है ना, ये एक प्रोटीनेशियस रेडियल स्पोक देगा सेंटर की तरफ. ये अरे 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 अपनी ओके बी से बना दिया ना मैंने. डू यू सी दैट स्ट्रक्चर हियर? आर यू विद मी ऑन दिस? आईज ऑन द स्क्रीन. आई एम मेकिंग इट वेरी थिक. दिस इज कॉल्ड एज माय पीपल radial spoke. Easy, right? So the radial spoke is made up of proteins. Everything is made up of proteins here. हाँ, वही सबसे कम खाते हैं हम खाने में. And we are fools. आया समझ में? Thank you for all the thumbs up. Please share the session. अब एक काफी important और common question है, यूकैरियोटिक सेल versus प्रोकैरियोटिक सेल. क्या हो गया? क्या हो गया? श्रद्धा, वो भी प्रोटीनेशियस है बच्चे. व्हाट अ गुड क्वेश्चन. आई लाइक योर डाउट्स. मुझे ना डाउट्स पढ़ के पता लग जाता है दिमाग किस रास्ते पे चल चुका है. गुड वन देयर डार्लिंग. दैट्स ऑल्सो मेड अप. इनफैक्ट आप ये देखो, इसके अराउंड ये जो आपको दिख रहा है ना स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का, दैट इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस. मेरे बच्चे, जहां पे भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, लोकोमोशन है ना, वहां पे आपको प्रोटीन ही प्रोटीन मिलेगा. प्रोटीन्स, कुछ आयंस का खेल और ढेर सारा एटीपी, और चलन चलाव हो जाता है. लोकोमोशन हैपेंस. चमका ना? चमक ही गया आज तो. मजा ही आ गया मैम. चलो अब डिफरेंसेस करते हैं. देखो ये बचपन का क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल. बधाई हो कि सेल का चैप्टर खत्म हो चुका है, एंड नाउ वी कैन अराइव रादर देन मगिंग अप द डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल. तो कई सारे टीचर्स और बुक्स में ना वो शुरू में होते हैं डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, बट आई पर्सनली वांट टू अराइव एट द कॉन्सेप्ट रादर देन थ्रोइंग इन्फॉर्मेशन एट यू. नाउ यू कैन इजिली मेक आउट द डिफरेंसेस. आई डोंट नीड टू टीच यू एनीथिंग, है ना. मेरा भी काम आसान और तुम्हारी भी जिंदगी में खुशियां. तो अपने आप देखो, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का जो बेसिस है, उस टर्म का ही क्या बेसिस है कि भाई यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस है. ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? रट्टे नहीं मारने, किसी भी हालत में पाप लगेगा. ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है जिसके पास न्यूक्लियर ऑनवेलप है, कैरियोथीका है, जिसके पास अपना न्यूक्लियर प्लाज्म है, कैरियोप्लाज्म है, और जिसके पास न्यूक्लियोलस है. ये सच्ची वाला न्यूक्लियस जिसने डीएनए को एनक्लोज किया हुआ, उसको बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस. एंड हेंस यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक बोले तो प्रीमेटिव, प्रो बोले तो प्रीमेटिव. भाई इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, इसका डीएनए नेकेड है, एंड इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोइड और द प्रोकैरियन. आया? सो पॉइंट नंबर 1, यस मैम. पॉइंट नंबर 1, यस मैम. हाँ, सो दिस इज द प्रोकैरियन. Now people, in prokaryotes, बोले तो bacteria, usually DNA is circular in nature and it is naked. Here you will find linear DNA. Please keep writing with me. Okay? Now the third here, I'm going to write it again. Third is organelles. भाई कौन से organelles? Membrane bound organelles यार, क्योंकि राइबोसोम तो दोनों में present है. So membrane bound organelles are present only in eukaryotes. But in prokaryotes we do not have organelles. आया या नहीं आया? अच्छे से आना चाहिए. उसके बाद
जो एक डिफरेंस आज आप लिख सकते हो बिकॉज यू आर ग्रोन अप इन द चैप्टर ऑफ सेल एंड दैट इज व्हाई आई एम डूइंग द डिफरेंसेस. प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स हैपेंस ओनली इन द साइटोप्लाज्म ना बाबा. काहे? Kahe? Because ribosomes, which are protein factories, are present in the cytoplasm. There is no ER. There is no ER. So 70S ribosome, ये अलग से डिफरेंस बना देते हैं. ये हो गया जी चौथा डिफरेंस. इधर क्या होगा? इधर आप लिखोगे चौथा डिफरेंस, साथ साथ लिखते जाना वरना काफी मुश्किल हो जाएगा. प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स हैपेंस इन साइटोप्लाज्म. माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास अपने राइबोसोम्स है एंड प्लास्टिड्स, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं. बिकॉज दीज टू, लेट्स सी स्टारबक्स, बिकॉज दीज टू आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स. यस मैम, नथिंग लाइक इट. ये तो इतने अच्छे से चमका क्योंकि हम पढ़ाई कर चुके हैं, है ना. भाई पूरव दो ही ब्रिज होते हैं यार. ऐसा होता है यार, तुम लोग ना मतलब सेंटी हो जाते हो. डबल ब्रिज हो गया ना यार, इसी को बोलते हैं डबल ब्रिज. ओके, सो राइट डाउन दीज डिफरेंसेस. क्वेश्चन आता है इसमें से. अच्छा, उसके बाद पांचवा डिफरेंस देखो कि प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल किसकी बनी होती है? म्यूरामिक एसिड, नैग और नैम. ओके, सो इधर हमारी जो सेल वॉल है ना बाबा, पांचवा डिफरेंस, दैट इज सेल्यूलोजिक. कोई शंका, डाउट, दुख, तकलीफ? अच्छा, एक और डिफरेंस, इसको 6 बना देते हैं. छठा डिफरेंस मैं यहां लिख रही हूं जगह की कमी होने के कारण. छठा डिफरेंस है कि भाई यू के प्रोकैरियोट्स में भाई 70S राइबोसोम होता है. आया? जिसमें 50S और 30S सब यूनिट होती है. और इधर मेरे पास यूकैरियोट्स में भाई कौन सा होता है? 80S. रितु कुमारी, don't break my heart. Please don't do that. Were you there in the class? Were you there in that class where ma'am taught ribosomes? I'm not scolding you. I'm not scolding you. I am finding a way together. You're a good student. You're a good student. Don't miss classes. Okay? So, I don't say this to every student, but you should not miss classes. 80S ribosomes. Okay? So, 80S ribosome है भाई इसके पास, साइटोप्लाज्म में भी, ER में भी, और इसके पास 70S भी है, दोनों है. Cool? अब आ जाते हैं जी प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच के डिफरेंसेस. महाज्ञानी लोग हो भाई. यार आदर्श, जो ER पे राइबोसोम्स है ना, न्यूक्लियस के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं. द प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म यू विल स्टडी इन क्लास 12th. सुमन बेटा, दोनों होते हैं, ग्लूटामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड. आदर्श, आई क्लियर्ड योर डाउट बच्चे. ओके, प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस देखते हैं. भाई एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस है सेल वॉल इज एब्सेंट. प्लांट सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट, है ना. एनिमल सेल अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, अपनी शेप भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स अपनी पोजीशन और सेल वॉल इतनी रिजिड होती है कि अपना शेप नहीं चेंज कर सकते, मन मर्जी नहीं चलती है. उसके बाद एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं. मैं इनको नंबर दे देती हूँ, आप भी पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखिएगा. पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखिएगा 1 and 2. ओके, 3 सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, 3 सेंट्रियोल्स एब्सेंट. उसके बाद एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, एब्सेंट नहीं होते हैं, है ना. पुराने जमाने की बात मत करो. दिख रहा है सबको? Purav, that's a good doubt, yaar. Put it in the main comment section.
I got your doubt, बच्चे. Put it in the main comment section. Alina, very good. Good to see you. Please share the session with your friends, family. Okay. चौथा डिफरेंस, बातें सारी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना. स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, और उस वजह से एनिमल सेल में न्यूक्लियस की पोजीशन सेंटर में होती है, लेकिन प्लांट सेल में न्यूक्लियस की पोजीशन कोने में होती है, पेरिफ्री में होती है. उसके बाद प्लास्टिड्स आर एब्सेंट. क्लोरोफिल तो नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होते, सो दोज आर एब्सेंट इन एनिमल सेल. लेकिन यहाँ पर पांचवा डिफरेंस देखिए कि, सॉरी फॉर द उल्टा पुल्टा ऑफ डिफरेंस, बट यू कैन इजिली मेक आउट. ओके, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट. भाई सेशन के जो कमेंट्स होते हैं उसमें, दैट इज कॉल्ड मेन कमेंट सेक्शन. नो, यू कैन पुट कमेंट्स नो ऑन यूट्यूब. लिख लिया बच्चों? Any help you want? Acha, I was trying to give you a good news in the beginning of the session. The next session, which is on Wednesday, the next session, listen to me carefully, people. All the years on the screen, all the years on the screen. Wednesday को 5 बजे मैं सेल चैप्टर के नीट में अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से, वो आपको सॉल्व करवाऊंगी लाइव at 5 p.m. on Wednesday. So please set your calendars. Mark your calendars. Don't miss that class, because I'll teach you how to read a question, how to solve a question, how to avoid negative marking, which portion of NCERT is important. Now talking about NCERT people, Saturday को, आने वाले Saturday को आपकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैं सेल के चैप्टर से आपको पढ़कर समझाऊंगी. सो दैट इज हाउ this is called a 360-degree preparation of every chapter, which happens only and only in Aakash Byju's NEET. Okay, and that is why you should be regular to the classes and you should subscribe to the channel, because there is nothing in your preparation that we leave. There is no stone unturned that Aakash Byju's NEET and I personally would leave in your preparation. तो NCERT की एक एक लाइन पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, नोट्स भी, सेशन नोट्स भी बच्चों को मिल चुके हैं, एंड यू गाइज आर लकी टू बी हियर, isn't it? Chalo, thank you so much, and I'll see you on Wednesday at 5 p.m. with previous year NEET questions. Don't miss that class. Subscribe to Aakash Byju's NEET channel and download the app and share this session with as many people as you can. Keep smiling and take care of your health.